यो व्हाट्सअप गाइस, आई एम योर फ्रेंड जय द लॉर्ड जे। और लास्ट वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके थे चैंपियनशिप जीतने के लिए। अब हम चैंपियनशिप जीतने के लिए जिस जगह पे चैंपियनशिप हो रही है उस जगह का नाम है आई गेस मदर्स गेट, ऐसे ही नाम है। उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और आज हम चैंपियनशिप हमारी शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में जब हम मदर्स गेट पे पहुंचे थे तो वहाँ पे हमें वो वाली लेडी मिली जिसने हमारा नामकरण किया था। और उस लेडी ने हमें बताया कि यहाँ पे एक जना है जो तुम्हारा बहुत टाइम से इंतजार कर रहा है। हमें समझ नहीं आया कि भाई साहब कौन हमारा इंतजार कर रहा है, जबकि हम तो यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं। तो अब सबसे पहले हम उस पर्सन से मिलेंगे और उसके बाद हम चैंपियनशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। भाई साहब लास्ट वीडियो के अंदर हमें एक नया सा हथियार मिला और एक नए एनिमल या फिर आप कह सकते हो मशीन से हमारा इंट्रोडक्शन भी हुआ। इंट्रोडक्शन क्या, हमने उसको हराया भी और हमें ये भी पता चल गया कि भाई साहब ट्रेडिंग कैसे करते हैं, नए हथियार कैसे लेते हैं और फायर एरो कैसे बनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो के अंदर सीखी। और फर्स्ट वीडियो में तो गेम ऑब्वियसली स्टार्टिंग हुई थी। आज होने वाला कुछ धमाकेदार, देखते कितना मजा आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे हैं, फिलहाल हमें ऊपर जाना है Aloy! पर्सन के पास। It's you, isn't it? अरे अच्छा, Aloy, isn't it? ये हमारा I'm दोस्त है यहाँ remembering पे। your name correctly? Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. I see you don't recognize me. Well, it was a long time ago. Teb is my name. You were half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again, if you came to run in the Proving. As you can see, I didn't turn out to be much of a hunter. I served the tribe as a stitcher instead, a maker of garments and armor. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What's it going to cost? क्या बात है। Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. तो भाई साहब इस पर्सन ने हमें बोला कि ये पर्सन जो है वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो हमारी तरह नहीं है। मतलब हमारी तरह से मेरा मतलब ये हथियार वगैरह नहीं चलाता, बल्कि इसने दूसरा काम पकड़ा। और दूसरा काम क्या पकड़ा, ये अब कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, मतलब कपड़े बनाता है। और इसीलिए इसने हमारे लिए भी एक कॉस्ट्यूम बनाई है और ये कह रहा है कि हम उस कॉस्ट्यूम को ले और एज अ थैंक यू ये हमें वो कॉस्ट्यूम गिफ्ट करना चाहता है बिना किसी कॉस्ट के। और ऑब्वियसली भाई हम लेंगे, कुछ चीज़ फ्री में मिल रही हो तो सबसे पहले लेते हैं, इक्विप भी कर लेते हैं। ठीक है, इक्विप। अब मैं एक बार जाके देखूं, बाद में जाके देखूंगा कि कौन कौन से कैसे कैसे कपड़े लग रहे हैं। I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. Every outfit offers some advantage. It's always a trade-off. Anyway, I shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about envoys from another tribe? Yes, that's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred land for the first time in years. I'd expect to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. ओके तो भाई साहब एक ये क्या खोल मैंने, यस ये चीज़ खोलनी थी। तो मैं क्या कह रहा था कि एक कार्जा नाम का कोई ग्रुप है, मे भी शायद ये कह रहा है वो कार्जा नाम का ग्रुप भी यहाँ पे आएगा और वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है। तो शायद वो टमाटर या फिर क्या बोल सकते हैं आप, मतलब पत्थर वत्थर फेंके हम पे, पर उसके बारे में बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल हम टीरसा को मिलने जा रहे हैं। टीरसा वही औरत है जिसने हमारा नामकरण किया था। और मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं यहाँ पे ये दिखाने आया कि भाई साहब हमारे कपड़े जो हमें नए वाले कपड़े मिले हैं वो ये है, पुराने वाले कपड़े तो ये दिखाई नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, चलो अगर मैं इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर लगाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, 2 वेपन है, बाकी सारी चीज़ें हो रखी हैं। चलो तो कोई सेव नहीं हो सकता क्या? नहीं हो रहा। John, get down from there. Bad enough you're drunk.
Why do you have to go climbing houses? Well, you'll have to tell this when I'm gone. Supposed to go climbing on other people's... Aloy, over here. ये कौन है भाई साहब? अरे ये वो जो हमें हथियार सप्लाई Come on करता है। over, Aloy. Karst? What are you doing here? Careful. Pretend like we've never met. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? How could I forget? And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving tomorrow. Can't wait to see the looks on some of these faces when you win. And if you need any last-minute supplies, I'm your man. Okay. So, Mother's Heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. I won't hold it against you. If you give me a discount. You can't be. I'm joking, Karst. It's good to see you. Don't go soft on me. All right, let's do this. ओके तो भाई साहब ये भी एक तरह से यहाँ पे आया है और ये इसको ये वाली जगह वैसे पसंद नहीं है लेकिन ये फिर भी यहाँ पे आ गया। इसने सोचा कि चलो यार चले जाते हैं, है ना। मतलब ये अब देखो हम दूर रहने की सोचे भी तब भी हम कितना ही दूर रह सकते हैं, कभी ना कभी तो हमारा मन करता ही है पास जाने का, है ना। तो इसलिए ये भी यहाँ पे आ गया। अब उसकी बातें छोड़ो और उसने हमें कहा कि देखो कल हमारा जो है वो चैंपियनशिप है, ठीक है। कल हमारी प्रूविंग होगी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम इससे मांग सकते हैं। अब इसके पास क्या क्या मैं देने के लिए, एक तो है ये, अरे आउटफिट्स भी हैं इसके पास। यार आउटफिट मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल मैं हथियार देखता हूँ। ये तो है एक तरह से गुलेल, गुलेल नहीं चाहिए। ये है इसकी मूवी देखूँ कैसे काम करता है ये। अच्छा अच्छा, तो ये एक तरह से पकड़ के रख लेता है, मतलब बांध देता है पर्सन को। और ये देखो ये क्या है, वॉरबो। अच्छा अच्छा, मतलब ये भी एक तरह से बो ही है जो हमारे पास जो हम बो यूज करते हैं, ये भी वही वाली बो है। बस इसके अंदर देखो ये आर्मर किस तरह के, बिजली वाली। अभी तक हमने कोई बिजली वाली तीर नहीं फेंकी, इसके अंदर हम वो तीर फेंक सकते हैं जो बिजली वाली है। अगर और नीचे आए तो ये क्या है भाई साहब, शार्प शूट बो। ये क्या है, अच्छा तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये बस थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल वो है। ओके मेरे पास पैसे हैं 126। मैं ये क्या लूँ, इलेक्ट्रिसिटी वाली और ये वाली ले लूँ क्या? ले नहीं सकता यार, कोई एक चीज ले सकता हूँ। अरे यार इतने पैसे है ही नहीं यार, मैं कोई बस एक ही चीज ले सकता हूँ। क्या लूँ फिर मैं? ये ले लेते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल भी यही है। मुश्किल बोल रहा हूँ मेरा मतलब सबसे ज्यादा महंगी भी यही है और मे भी शायद सबसे ज्यादा डैमेज भी इसी में हो। एक मिनट, इससे क्या होता है, बिजली के झटके लगते हैं। इससे क्या होता है 150 तक की पावर चली जाती है। ओके, और इससे क्या होता है, पावर के लिए नहीं है ये, बस ओके बेवकूफ़ा बनाने के लिए। और इससे पावर 30 की जाती है, इससे पावर नहीं जाती। फिर यही ले लेता हूँ ना, ये ज़्यादा बेटर है जब इससे पावर 150 तक की जा रही है तो। ठीक है, इसको बाय करते हैं, इक्विप इस वाले स्लॉट पे इक्विप कर लेते हैं और बाद में देख लेंगे इसको। Until next time. चलो Next time, you'll be a brave. ओके, क्वेस्ट मेन्यू, ये दोनों ट्यूटोरियल्स हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो हमारे पास वेपन हमने खरीदे हैं या फिर लिए हैं उसको जाके सीख के आए हम कि वो काम कैसे करते हैं। और ये हमें थोड़ी बहुत चीज़ें मिली हैं। ओके, तो ये एमओ बनाने का क्राफ्ट था। और ये क्या है ऐसा, टाई रोप लाइट। ठीक है चलो बढ़िया। अगर मैं और इन्वेंटरी में जाऊं तो मेरे पास एमओ आ गए। ये अलग तरीके का एमओ जो अभी हमने वो चीज़ ली है। ये हमारा वो नया वाला वेपन जो अभी हमने लिया है, लेकिन हम नॉर्मल वाले वेपन उसके ऊपर ही आ जाते हैं, तीर पे। ठीक है, और हम जाते हैं जहाँ पे हमें जाना है। In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome.
For 2 years, we have been at peace with the Karja. It is time to restore our bonds of trade with Meridian. These envoys come to us under a banner of peace. An enunciation of gratitude written Killers by the and hand slavers! of Sun King of Killers and slavers! Hey! Luminance of Hold your fruit, Nora. Nora Faithful, hold your fruit. Now I'm Azaran, not Karja, so I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bum. Oh, he was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. Who killed him? The 14th. Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please, can't you lend him your ears? Thank you. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King Avad, 14th luminance of the Radiant Line. ऐसा एक और पर्सन के पास है भाई On the eve of your proving, What's that mean? know the Karja stand with you. He's wearing a The focus, sun's light just like mine. frames the stoutest trees, as though Did you see those you have Karja nurtured, Where did he find take a their focus? places among your braves. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not. If you've gone delving in the ruins of the metal world. What's wrong? Apologies. A malfunction. Oh, Lynn, you making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Well, I guess he's more hungover than I thought. Hey, you got the same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird old jewel he sticks on his face. I mean, no offense. It looks great on you. Okay. I thought your friend was gonna go down in a hail of fruit, but you really calmed the crowd. Thanks. I wasn't sure I could do it. The Nora is still pissed with the Karja about the Red Raids. And who can blame them? Okay. I should make my way to the blessing. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and... well, I mean, look at you. What are you talking about? You know what. All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life, if you want it. I'll even introduce you to my sister. She's got more connections than I do. I thought you said she was captured and killed by the last Sun King. Ha! Captured, yes. Killed, no. It takes more than a few Karja to finish Ursa. She got away. Now she's captain of the entire Vanguard. That's quite a story. And maybe I'll tell it to you sometime over a drink. Anyway, I have to go to that blessing thing, too. So, see you around, maybe? ओके तो भाई साहब इससे बात हो गई हालांकि मैं और बात भी कर सकता था लेकिन खैर छोड़ो अब मैं नीचे जाता हूँ जहाँ मेरे को जाने को बोला गया पर उससे पहले एक मैं सही जगह जा रहा हूँ ना मैप के अंदर देखते हैं मैं कहाँ पे हूँ मैं इधर हूँ
इस तरफ से नीचे होना है, ठीक है, आगे से। हाँ जी, तो ये जो अभी जिससे हमने बात करी वो और उसका एक साथी दोनों यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे दोनों के दोनों इसलिए आए क्योंकि ये लोग एक पीस मेंटेन करना चाहते थे। अब ये लोग कारजा से, कारजा भी है हमारी तरह एक दूसरी ट्राइब है, हमारी ट्राइब का नाम नोरा है, उनकी ट्राइब का नाम कारजा है, और कारजा और नोरा के अंदर दुश्मनी है क्योंकि कारजा का जो राजा था वो नोरा के ऊपर हमला करते रहता था, लेकिन अब वो राजा का बेटा जो था उसने राजा को मार के पीस मेंटेन कर दिया है। और अब हम यहाँ पे आए हैं, देखते हैं यहाँ क्या होगा। टॉक टू टीरसा, ओके, मेरे को टीरसा से बात करनी है। Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Blasphemy. Sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. For roast, for my mother, for myself. रोस्ट के लिए करेंगे भाई साहब, मदर को तो हमने देखा ही नहीं है, और खुद के लिए क्या ही करें, हम रोस्ट के लिए करेंगे। In honor of Rost, and all he did to help me get here. Oh, Mother, hear our prayer. What is the child but a mother's hope that takes flight? A glowing flame that climbs the air, set free to the wind, sailing the sky till it fades and falls. So, from one to another, passes the chain of love. ओके, तो बहुत बढ़िया। हमारी जो चैंपियनशिप होने वाली, जो प्रूविंग होने वाली है, उससे एक दिन पहले हमने एक पूजा करी है, और अब हमारा क्या टॉक टू ओलिन। ओके, ओलिन से थोड़ी बातें करनी है। यहाँ ये यही तो खड़ा हुआ है ओलिन। That blessing wasn't bad. Nice and short, anyway. But I know a half dozen Oseram tinkers who could put on a better fireworks show. ये तो ईरेंट है यार, ईरेंट से बात नहीं करनी, मेरे को Hope I'm ओलिन से बात not करनी। throwing the wet blanket on your sacred ritual. It was nice. Really. क्वेश्चन इस समय थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछो या रहने दो? चलो पूछते हैं। रेड रेड और कारजा, इन दोनों के I बारे में। never heard anything about red raids growing up. What were those? Your tribe was at war and you didn't even know? Were you kept hidden away? Did you have overprotective parents or something? I grew up as an outcast, shunned by the tribe. Oh, yeah, I've heard the Nora do that. That seems cruel, if you ask me. But even an outcast knows about the derangement of the machines, right? How they get deadlier every year? Well, the mad Sun King figured if he spilled enough blood to the sun god, it would calm the machines. Didn't work. But for years, he raided the tribes and took captives for sacrifice. My sister among them. The Nora put up a good fight, but lives were lost. Okay. So what happened? How did it all end? The Mad King's own son united Karja rebels with Oseram freebooters. Together we did the impossible, took back Meridian and killed the crazy old king. So now the son sits on the throne and it's a big improvement. Under Avad, there's no more sacrifices, no more slavery. People from all tribes are welcome in Meridian now, even Nora exiles. You really should come visit. Okay. Who are the Oseram? Oh, that's my tribe, far to the northwest. We're good at three things: arguing, working steel, and brewing. And freebooters. What are those? I guess you could say we were mercenaries, warriors for pay. Except a lot more loyal than that makes us sound. Avad couldn't have taken down his father without our metal and muscle. And now some of us serve proudly as his personal vanguard. You said the machines have been getting more dangerous every year. Yeah, I don't have to tell you that, right? First I've heard of it. Oh, sorry. I just assumed everyone knew. Well, the way I hear it, 15, 20 years ago, the machines weren't always pissed off like they are now.
When a hunter came at them, they'd spook and run. So it was hard to take them down, but not dangerous, so long as he was smart enough to jump out of the way. But then the derangement starts up and everything changes. Now, when a hunter fires a shot, the machines snarl and charge right at it. A few more years pass and they start attacking people on sight. Going anywhere becomes a major risk. If that wasn't bad enough, entirely new kinds of machines start showing up. Bigger, meaner, and heavily armed. Like the Sawtooth. Yeah, 10 years ago, that one. But every couple of years or so, something worse comes along. Believe me. So what's making it happen? And no one knows. And the machines, well, they aren't telling. Okay. If the Karja have such a cruel history, how did you end up serving them? The last king and his men were butchers. But the new king wants peace. There's nothing cruel about that. Besides, the Karja don't just fight, they build. But take Meridian. Next to it, everything else is just a bunch of sticks and stones. Just how big is Meridian? What's it like? Where do I even start? My tribesmen are masters of the forge, the best tinkers in the world. But when it comes to building, the Karja have us beat. The city soars over a canyon with more bridges than the Nora have roads and buildings tall as mountains. And across the valley stands the spire, like a blade thrust into the sky, reflecting the sun. You really owe it yourself to see it. So consider that a challenge. Or an invitation. चलो भाई साहब बहुत बातें हो गई. I want to ask you about something you said before. Ask away. Question हो गया. You can knight armor. Olin. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact-protected, sturdy enough to choke a sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life-takers and machine-breakers to a one. You might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. चलो. हम जल्दी से What Olin else के do you बारे know में about पूछते हैं. Olin? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. चलो. Yeah, well, good luck in that proving thing. Maybe I'll see you in Meridian someday. Who knows? ओके. तो ये जो इवेंट था जिससे अभी हमने बात करी, ये बंदा जो है अरे ओलिन से भी बात करेंगे हम. पहले हम देखते हैं इवेंट से जो भी हमने इतनी देर में बात करी वो बस एक छोटी सी कन्वर्सेशन थी जिसके अंदर उसने हमें बताया कि नोरा ट्राइब और कार्जा ट्राइब के बीच में लड़ाई है तो वो क्यों है और अब लड़ाई शांत हो चुकी है और वो कार्जा ट्राइब से किस तरह अलग हुआ. प्लस उसने हमें ये बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और भी ज़्यादा मशीन अपग्रेड होके आती जा रही है. वेल, यही काम की इन्फॉर्मेशन थी, बाकी सब तो बेकार थी. ओलिन से बात करके हम रेस्ट करने चलते हैं. Hello, Olin. You know my name? Ah, guess Aaron told you. Why did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for crowds. Maybe turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. I've never seen anyone else with a focus. Where exactly did you find it? In a ruin, north of the Claim. That's our name for the Asuram homeland. Up there, the metal seams run deep. Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. Okay. What are you doing here, Olin? Why come to Noraland?
Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking. That's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer? Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the King's court. That's all. When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. Never happened to me. Why are you lying to me? Mine's never malfunctioned, and I've had it since I was a child. So yours is in better shape then. I'm sure the land here is full of relics. Seeing how you Nora are too scared to delve the ruins. Because they think ruins are cursed. But I never said I think that. If the North acknowledges a curse, I'm inclined to agree. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should... try to enjoy yourself tonight. Big day tomorrow. Always best to make every day count. ओके तो भाई साहब ओलिन से हमने बात करी ओलिन से बात करके ज़्यादा हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने उससे ये बेसिकली से हम ये इसलिए बात करना चाहते थे क्योंकि उसके पास भी हमारी तरह वो डिवाइस है और हम जानना चाहते थे उसको वो कहाँ से मिला उसने हमें बताया कि उसको भी एक केक से ही मिला जैसे हमें मिला था पर वो ये बताने को रेडी नहीं है कि भाई साहब उसका वाला मेल फंक्शन कैसे वो ये कह रहा है कि उसका जो डिवाइस है वो ख़राब हो चुका है इसलिए उसको बार बार दर्द होता है लेकिन हमें तो ऐसा कभी हुआ नहीं क्या छोड़ो हम फूड सेव करते हैं बहुत बढ़िया और अब हम जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि कल हमारी चैंपियनशिप है प्रूविंग है कल हमारी Motherless chuff. What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Oh, this is the bed house? With you standing guard, I figured it was the latrine. You're very present here. Well, look who's come in from the wild. The motherless outcast. I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. भाई साहब ये वही बच्चा है जिसने बचपन में हमारे सर पे पत्थर मारा था अरे एक बात तो मैं बताना भूल गया जो ईरान है जो हमें स्टार्टिंग में जिससे हमने बात करी ईरान से वो हमें पसंद करता है लाइन मारा था हम पे वो चलिए इससे बात करते हैं Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. Okay. I pity you. You are afraid I'm going to win. Too bad for you that I'm gonna win it then. I've trained all my life for this. If I lost to you, I'd make myself an outcast for life. Don't overestimate yourself. You wouldn't last long in the wilds. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. What I remember is how the other children saw that you were a monster. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Yeah, right. This is boring. Time for Boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Okay. तो भाई साहब बहुत बढ़िया हमने इससे बात कर ली और एक टॉपिक हमारा निपट गया अब हमें क्या करना है यहाँ पे आके सोना है ओके और इससे बात भी कर सकते हैं ऑप्शनल है चलो इससे बात Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met.
I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that. Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run you into the ground tomorrow. Your bunk's right there when you want it. Okay. Thanks. चलो भाई साहब, अब हम जाके सोते हैं क्योंकि कल हमें उठ के चैंपियनशिप जीतनी है। ये 3 जने थे, एक मैं, एक वो लड़की और एक वो लड़का। Your first day in Mother's heart. What do you think? You've never slept in a Nora lodge before. Not very private. Hate it, not bad. Too soft. Comforts and distractions. That's what I think. Not all comforts are bad. Comforts are weakness. You sound just like my mother. You can always go back to living in the wilds if you have to. In the meantime, get some rest. Okay. तो भाई साहब हमें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ये जिस तरह के माहौल में हम रहे हैं ये थोड़ा उससे ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। बेसिकली ये जो 3 जने थे ये 3 जने जीतने के प्रथम दावेदार हैं और ये तीनों के तीनों में जीतने का पूरा उत्साह भी है। लड़की हमारी अच्छी दोस्त बन सकती है लेकिन लड़का हमसे कलसा हुआ है। अब हम प्रूविंग के लिए जा रहे हैं और यस चैंपियनशिप शुरू हो गई है। देखते हैं कि आज हम इस चैंपियनशिप को जीत पाएंगे या नहीं। Braves! Ready yourselves! What will it take to get you out of here? Okay. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन नोरा। भाई साहब किलर ग्रेट, अच्छा इसको मार रहे हैं। मर गया। भाई साहब बस बचा के खेलने, इन सबको मारना है। ओके मैंने मार दिया। अरे एक मिनट, रानी बच्चे। Your trophy is shattered, outcast. Looks like you'll need another. ओके भाई साहब, तो उसको मार के मैंने काम तो कर दिया, लेकिन अब मेरे को दूसरे को किसी और को भी मारना पड़ेगा। इसकी फरामी बच्चे ने मेरा काम खराब करेगा। And again. एमो खत्म हो गया मेरा। ओके गया। Faster, come on. इसके अंदर मिल सकता है मेरे को?
यस देख मिल गया बहुत बढ़िया। अब मेरे को वहां पे आगे जाना है, इनको मारना था, इनको मार के इससे ट्रॉफी लेनी थी, ट्रॉफी मैंने ले ली। हालांकि एक इनका इक्विपमेंट है वो उसी लेनी थी, वही चीज इन्होंने ट्रॉफी कंसीडर की हुई है। बहुत बढ़िया। मैंने तो ले पहले लिया था लेकिन उस बच्चे ने मेरे को हरवा दिया, मतलब हरवाया नहीं, पीछे करवा दिया, पर कोई बात नहीं। Slow and steady now. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. Strong. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win or Vala, but you'll be made a brave so long as you finish. Oh, now. That's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. Better dead last than dead altogether. ओके, तो भाई साहब अब हम यहाँ से आगे जाने के लिए दूसरा रास्ता ले रहे हैं। Whoa, whoa, whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill yourself! अरे रे रे रे! It doesn't get any easier. You're insane to go that way. That's it. No way but forward Just now. stop right there. There. Gotta catch up. बहुत बढ़िया। I can't see. भाई साहब हमने अलग रास्ता इंटैक्ट कर लिया क्योंकि पिछले वाला रास्ता जो था वो खराब हो चुका था। Faster. Stop भाई dragging. थोड़ी जल्दी जाना पड़ेगा इससे पहले कि वो लोग Gotta keep पहुंचे। going. The outcast. From the old trail? Is she अच्छे, crazy? ओ भाई साहब क्या बात है। Good. I'm gaining. The outcast is catching up. How'd she get up there? ओ हो। Made it. Come on now, hurry. बढ़िया। Keep at it. लेकिन मेरे को लग रहा है मैं अभी थोड़ा पीछे हूँ। हाँ मैं पीछे ही हूँ, पर कोई बात नहीं, कोशिश पूरी थी हमारी और मैं आगे भी पहुँचूंगा। I've trained my whole life for this. They had a tribe, but I had the wilds. Precision. Not enough. Must be perfect. बहुत बढ़िया। अरे पहुंचने वाले बस जल्दी से, थोड़ा सा क्या। Come on, you can make it. Can't let them beat me now. और यस, ओ भाई ने सबसे पहले बोला क्या बात है। यहाँ पे आके क्या करना है? ओ मैं फर्स्ट, लड़की सेकंड, लड़का थर्ड। She didn't win. The outcast cheated. An outcast win the proving? बढ़िया, मैं जीत गया। Never. क्या? For she is a brave now. We did it. As are you all. So long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy, once outcast and now brave, who is first among you. अबे भाई साहब हमला हो गया। Keep them pinned down till the others arrive. We can't stay here. That's the way out. But we won't make it under fire. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Fast! Fast! Are you with us? I'm with you. Let's go. Now! Kill them! ओके, देखते हैं कहाँ पे भाई साहब, बहुत सारे जने। ये तो इन सबको मारना है। Too many of them. अटैकर। We can't win. बहुत बढ़िया, एक को मैंने मारा। We can't hold them. Oh, mother, help us! Kill the defilers! गया, बहुत सही।
यार ओ भाई मेरे पास कोई भी वो नहीं बची यार शिट मेरे को घास चाहिए Kill the invaders! They're too strong! We can't stop them! भाई मेरे पास तीर नहीं बची थी लेकिन यार अब मेरे पास तीर आ गई है हम आ सकते हैं We can't win! और कौन सा बचा है एक बचा We can't hold them! Oh, Mother, help us! गया बहुत बढ़िया गए सारे गए Quick! Run for the slip wire! अरे नहीं अभी सारे नहीं गए थोड़े से रह गए Kill them all! No witnesses, no survivors! Keep fighting! कितने जने हैं भाई साहब? No, ओके this ये one. सारे They keep coming! How many are there? बहुत बढ़िया गए एक मेरे पास आर्मर के लिए कुछ है Too many of them! Keep coming. ओके बहुत बढ़िया और कितने रह गए अरे तो आए जा रहे यार We can't hold them! Oh, Mother, help us! Kill them! Kill the defilers! They're too strong! ओके कोई बात नहीं We can't stop मेरी them! तीर खत्म हो रही है लेकिन मैं मार सकता हूँ ओए बच्चे Kill the invaders! गए बहुत सही Too many of them! We can't win! एक रह गया बस मर गया और कोई नहीं बचा यार ये आए जा रहे बार आए जा रहे यार शिट कोई बात नहीं मैंने इनको बचाया तो सही मेन बात ये है Now, descend while we have a भी chance. दोस्त है हमारी मतलब इन ट्राइब के लोगों में से बाकी 2 जने और हैं जो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते पर अभी हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन लोगों पे कौन है ओ भाई साहब ये तो गन ले आया अरे नहीं यार ये भी गया अबे गधा है क्या यार ये The red hair dies now! Everyone, forward! भाई साहब शिट मतलब इस जगह तो और कोई नहीं बचा मेरे अलावा सबसे पहले इसको निपटाना पड़ेगा भाई साहब शिट मेरे पास 2 भी है
नॉर्मल वाली वो गन मिल गई मेरे को। कोई बात नहीं, इसको तो निपटाओ यार इसी तरह से। नहीं, मेरे को उसको छुपा के मारना पड़ेगा। गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका हथियार लेते हैं। यार ये क्या मस्त हथियार है। वाओ, एमो खत्म हो गई। कोई बात नहीं, एमो खत्म हो गई, कोई बात नहीं। मैं अब भी मार सकता हूँ, मेरे पास 10 तीर बची है। गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके भाई, बहुत मस्त तरीके से मैंने सबको बचा, नहीं सबको तो नहीं बचाया यार, लोग मर गए, मैं बचा नहीं पाया, पर यस मैंने इन सबको मारा। और इनके पास भी डिवाइस है, और यार इसके पास डिवाइस जो है येलो कलर की लाइट निकल रही है, मेरे पास नीली कलर की निकलती है। इसका मतलब भाई बात सिंपल सी है कि उसका जो भी ऑल इन था उसका डिवाइस खराब नहीं था। अभी क्या कर रही है? Turn your face to the sun, child. कौन आ गया? ओह यस, बाप आ गया हमारा। अरे मेरी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। यार मैं कहाँ पे हूँ? एलोय बचा लेंगे आपको। और भाई साहब मर गया। अच्छा मेरे लगी हुई है इसलिए मैं खड़ा नहीं होता। Burn it all, then to your task. As you command. भाई साहब ये कौन है? पता नहीं किस अनजान लोगों ने मेरे पे हमला किया। ओके भाई ये तो बम से उड़ाने के चक्कर में है। अब तो लगने वाली वाट लग जाएगी। ओ अभी भी थोड़ा थोड़ा बचा भाई। Aloy. Survive. ओ भाई ऐसे कैसे सरवाइव करेगी? गई भाई गई, नीचे गई, नीचे गई। चलो इससे तो सरवाइव कर ही लेगी। भाई साहब बम पड़ा हुआ था उधर, बम से फट जाते तो कोई चांस नहीं था बचने का, लेकिन अब मैं यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, झरने से नीचे गिर रहा हूँ, तो शायद एक चांस है 1% के मैं बच जाऊँ, लेकिन 1% चांस ये है। ये मैं किस तरफ आ रखा हूँ मेरे को कुछ नहीं आइडिया। बचपन की चीजें याद करती हुई। She is dying. ओके अच्छा, तो ये इन लोगों ने मेरे को बचा लिया। अब भी मैं बचपन की चीज याद कर रहा हूँ। To take her there is blasphemy. She should be near her mother. क्या? Aloy, I'm so sorry. Turn your face to the sun, child. भाई साहब ये पता नहीं क्या हो रहा था। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मेन बात ये है कि हमें बचा लिया गया और रोस्ट बेचारा नहीं रहा।
एक ही इंसान था जिस पे हम प्रॉपरली ट्रस्ट कर सकते थे, वो अब रहा नहीं। अब बस हमारे साइड एक वही तीरसाई बची हुई है जिसने हमारा नाम रखा था। जो हमारी दोस्त बनी थी वो भी मर गई और हमारा फोकस भी खो गया। I need my focus. No. भाई साहब जो इसका डिवाइस है कान में लगा हुआ है, उसका नाम इसने फोकस रखा है और वो खो गया। They must have found me before I bled out. ओके, मैं कुछ स्कैन नहीं कर सकता। मैं पता नहीं किस जगह पे हूँ भाई साहब। यहाँ से आगे जाने की जगह है, कहीं से भी चलते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं एक बार। ओके, नहीं आना था शायद। My clothes. Good. But where's my focus? It's here. Okay. ओके, मेरे को मेरे कपड़े और फोकस दोनों मिल गए, पर मेन बात तो फोकस के ऊपर है क्योंकि कपड़े तो हमने ऑलरेडी पहने ही हुए। Am I inside the sacred mountain? But only matriarchs are allowed inside. ओके, तो भाई साहब हमको एक सीक्रेट माउंटेन के अंदर है इस टाइम पे। I don't see my bow here. Or that damaged focus, the one I took off that killer. Where अरे are मैं they? आया कहाँ से था? खैर छोड़ो, मेन बात ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ से आगे जाना है इस जगह पे। ओपन डोर। ठीक है। I'm picking up some kind of signal. हमें इस जगह पे किसी न किसी तरीके से सिग्नल मिल रहे थे। अब ये गेट खोलना है और इस गेट को खोलने के लिए अलग अलग हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये हम गेट के पीछे आ गए। ये क्या है? पावर cell. I wonder what it's for. पहले पावर सेल पता नहीं हमें किस चीज के लिए है पावर सेल। मेन बात ये है कि इस जगह पे हमें नहीं आना था, पर चलो कोई बात नहीं, हमें एक जगह पता चली। देखो इस गेट के पीछे क्या है वो हमने जाके देख लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रास्ता कम हो गया। एक ये वाला रास्ता भी है, मे भी शायद यहीं से हम आए हैं। ये वाला रास्ता तो लॉक्ड है, इस वाले पे जाके देख लेता हूँ फिर। There, with the rest of my things. अच्छा, ये मेरी बाकी सारे सामान मिल गया। उठाओ मेरे अपने सारे सामान को। मेरे कपड़े वापस आ गए, मेरा बो वापस आ गया, मेरा फोकस वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया और फोकस काम भी कर रहा है। ठीक है, सारी चीज चेक। What can you show me? अच्छा, तो भाई साहब ये दुश्मन का फोकस है। जब लड़ाई के टाइम पे, जब हम लड़ रहे थे उस टाइम पे हमने उन लोगों में से एक का फोकस ले लिया था और अब हम उसका फोकस देखते हैं। Excavations and proceeded once to the mission point. Avoid all contact with Nora savages, but if you are seen, kill every witness. Target imaging attached. Do not fail. Target imaging. Who says I'm like other Nora? They saw me through Owen's focus. How is that possible? Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me. Where's this from? And when? ओहो, ये हमारी माँ हो सकती है। हाँ देखो, इसको भी लग रहा है क्योंकि ये लोग डीएनए स्कैनिंग कर रहे हैं और मेरा एक फोरस के साथ इन्होंने डीएनए स्कैनिंग करा
और वो 90% से ज़्यादा मैच हो गया। Just because I look like you. Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Are you saying I was... Okay. तो भाई साहब अब ये जो लेडी है, लेडी अब हमें उसके पास लेके जा रही है, मतलब उस जगह पे लेके जा रही है जिस जगह पे हम पैदा हुए थे। मतलब इस लेडी को हमारे बारे में बहुत सारी बातें पता है। देखते हैं भाई साहब क्या क्या सीक्रेट है। एक ऑलरेडी एक लेडी है, मतलब जो अभी हमने फोकस में देखी, जो हमारी जैसी दिखती है, हमारी माँ हो सकती है वो, लेकिन हमारी माँ के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं और इसी वजह से वो शायद हमें मार रहे हैं। वेल देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये राज क्या है। It seemed you were dying, and to die near one's mother is sacred. Lantra fought it, of course, but Jezza sided with me. Is my mother here? Am I going to meet her? It's complicated. Please, just follow me. Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What are you talking about? Come. What is this place? The Great Chamber, where All-Mother slew the Metal Devil and gave birth to you. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is... everything. This is where we found you. We heard your cries, came to look, and there you were. Okay. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All-Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But... this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. My mother? Oh! Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. No, no. Please. Aloy, All-Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption. The goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. And how would I do that? You said you've had visions. Of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her.
but their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Owen. He was one of the outsiders. The night before the proving. The killer saw me through his eyes. He lives in Meridian. So you will have to leave the sacred land. I've been an outcast all my life. Why not an exile too? Shh. There is another way. Come, and we will make it so. ओके भाई साहब बढ़िया बहुत सारी बातें हमें पता चली है यहाँ पे एक बार बाहर क्विक सेव मिल जाए तो उससे सेव करके रिकॉल करता हूँ मैं सारी चीजें party was sent after the killers. Less than half survived. How was the war party defeated? The killers do not fight alone. Somehow they have a power over the machines, corrupting them, driving them mad. So the killers got away? Yes. And now the only plan my sister matriarchs can agree to is to sing the Hymn of Atonement and beg for All Mother's mercy, as though she would not want us to help ourselves. Then, what's your plan? This was my plan. To show you where you were born and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. The other High Matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. आज हमें बहुत सारी चीजें पता चली बहुत सारी चीजें और आज के बाद हमें एक नया सस्पेंस भी मिल चुका है. It is done? Yes. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that? She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the one goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. Our hopes lie with you. Tirsa, what's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker. A worthy brave sent forth to accomplish a great purpose. No matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. Okay. So I can go anywhere at all? No restrictions? Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight. Or the ruins of the metal world. I see. Have there been other seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a seeker? No, not a seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. Why are the ruins of the metal world forbidden? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked. Like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin.
It looked a lot like the inside of Allmother. That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. What was done with Rost's body? I'm afraid there was very little left to recover. But what there was, we buried at the place where he raised you, with flowers on the grave. Thank you. So many have suffered. Is there anything I can do to help? What is most important is for you to fulfill the purpose All-Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in need throughout the Embrace. You said that Nora sent a war party after the killers. Yes. But it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. And most that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varl, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a Seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All-Mother bless you and watch over you. बहुत बढ़िया Nora आप faithful, जल्दी से we will soon begin. Purify your. भाई साहब जल्दी से मेरे को एक वो देखना है यस यही मेरे को चाहिए था क्विक फायर करने Soon we क्विक will सेव beg करने वाला forgiveness for the sins that brought such misery on the tribe. The outcast. Our mother will forgive us. So she survived. She will. ये लेते लेते चलता हूँ साथ में काम आएंगे आगे She saved many lives. The tribe is lucky to have her. Rain's not so bad. Aloy! Aloy! Teb? All-Mother be praised. You're alive. I heard the rumors, but I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. And you're even wearing the tunic I stitched for you. I'm honored. What sort of rumors did you hear? That you were wounded. Expected to die. And then, High Matriarch Tirsa insisted that you be allowed to heal inside All-Mother. Huh. That caused a stir. Only matriarchs are allowed to enter the mountain. But you deserve the honor. The survivors had told everyone how you fought to save them. I wasn't the only one to fight. No. They spoke of Bast and Vala, too. And Rost, the man who raised me. He fought to save me, and he died for it. The survivors didn't speak of him, but I remember him. He was there that day when you saved me. I remember he stepped in front of you when my father started yelling. If by dying he saved your life, Aloy, I don't think he regretted it. I need the gate opened. Do you have any idea how dangerous it is out there? I need to pass through. You'll have to talk to Resh then, up on the wall. He's the new war chief. I'm not sure he'll help you. What's the danger in the Embrace? Are the killers still there? No. They're long gone. The war party went after them, but the killers slaughtered them. They have some
evil power over the machines. They corrupt them, make them fight at their side. And these corrupted machines, they're loose in the embrace? Some have broken through. And from what I hear, it's even worse outside the embrace. Believe me, this is no time to go traveling. What are you doing here with a bow and spear, Teb? You're a Stitcher, not a Brave. Most of our Braves are dead or wounded, Aloy. Someone has to defend Mother's Watch, so I thought I'd help out. I should be okay. Just as long as I don't try to run any Brave trails, right? Why wouldn't Resh help me? Well, he says mean things about you. That I'm a motherless curse, an outcast, that sort of thing? Yeah. I wish he hadn't been made war chief, but Sona disappeared after the ambush. They say she went after the killers all by herself. Who is Sona? Sona was the tribe's war chief, but she went missing after the war party was ambushed. You probably saw her at Mother's Heart. A tall, lean woman with dark skin and long white hair. Her daughter ran in the proving, but she died. Was Vala her daughter? Yes, she was. I liked her. So did I should be on my way, Teb. Be safe, Aloy. ओके तो भाई साहब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिलहाल हम गेट खुलवाते हैं और गेट खुलवा के आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट यार, गेट खोलने के बाद गेट के बाहर है वो पीछे वाला। पहले उससे पहले मैं इस जने से बात करनी पड़ेगी। यार कोई बात नहीं, चलो बात करके आगे जाते हैं। They say it broke through the gates of the embrace. Who is they? I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Since I was anointed a seeker. Now open the gate. You? A seeker? Have Tissa and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. You are nobody. You dishonor the dead. Or watch your tongue. How can you be so heartless? I fought beside those children, shoulder to shoulder and back to back. I saw them fall. If even one of them had been true Nora, they would have put an arrow in your back. Resh, come on. Silence! I am your war chief. And I am a seeker anointed by the High Matriarchs. So open the gate, and I will be on my way. The sooner you're gone from here, the better. What was that? अबे ये क्या आ गया यहाँ पे? ओ तेरी भाई साहब! Sound the alarm! भाई केकड़े वाली मशीन आ गई भाई साहब, केकड़े वाली मशीन आ गई। By the goddess, what's it doing to them? Taking control. अरे भाई साहब! Brace yourselves! What have you brought on us now, you motherless curse? Kill them, Braves! Kill them all! ओके भाई साहब, बहुत बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पे। जल्दी से लड़ते हैं। Today we fight a curse, a demon. Oh, Mother, give her strength. Won't be long. Gotta get in position. Here it comes. पीछे आके लड़ना भाई साहब, पीछे आके थोड़ा सा। Watch the Striders! It's भाई driven them मेन वाले को back! मारने की कोशिश करता हूँ मैं पहले। मेन वाले की वीकनेस क्या है? ओ ओके, अरे ठीक, पावर गई, मेरी पावर गई।
मेन वाले की वीकनेस है हीट, बहुत सही। अगर हीट उसकी वीकनेस है तो मैं गरम वाली फायर एरो मारता हूँ उसके लिए। यार इसको लगनी नीचे फायर वाले एरो लग तो रही है, लेकिन इसकी पावर नहीं जा रही, बहुत धीरे जा रही है इसकी पावर। मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। मैं ये वाली लेता हूँ, ये मैंने अभी तक यूज नहीं करी, इसको यूज करके देखते हैं। अरे नहीं 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 यार, पावर जा रही, मेरी पावर जा रही, बहुत ज्यादा पावर जा रही है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। ओके, इसको एक जगह बांध दो। यस, बहुत सही। पहले इसमें जाके क्रिटिकल हिट करते हैं। ओके, अब इसमें बहुत सारी फायर एरो मारते हैं। अरे बढ़िया, ठीक है, इसको फिर से बांधो इस जगह पे। मार भाई, क्रिटिकल हिट दो इसमें। ओ बहुत बढ़िया, मार दिया इसे। These things marched with the killers. It's proving. How'd you do it? Show me. Okay. You made them obey you. हम इसके अंदर से वो इंस्ट्रूमेंट निकाल रहे हैं जिससे ये बाकी एनिमल्स को या बाकी मशीन को काबू करता है। It's connecting to my focus. Then I could use this. It's worth a shot. हमारा फोकस इससे कनेक्टेड है। Of wire. Looks like it'll hold. I just need to test it. बढ़िया। Aloy, how did you do that? You killed that demon. Pulled its guts from the carcass. The way it controls other machines. I think I figured it out. But I need to test it on a machine. Plenty of striders along the path to the gates of the Embrace, I guess. Exactly. And the gates are where I'll be headed anyway. I need to speak to Varl. I always knew you were different, Aloy, but... But what? I think you're a blessing from All Mother. No matter what Resh says. Thank you, Teb. But I have to go now. I know you do. And my thoughts go with you. Okay, भाई साहब आज बहुत कुछ हो गया, बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया। यार मैं एक बार जल्दी से ना इसको एक बार सेव करता हूँ, उसके बाद देखिए आगे का क्या होगा। See what this device can do. Good save, बहुत बढ़िया।
अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यस देखो मैं बार बार क्विक सेव बस इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि आज की वीडियो लंबी हो गई थी ऑलरेडी जो इसका टाइम लिमिट जो मैंने सेट किया था वो पार हो गया था, तो मैंने सोचा अब जल्दी से क्विक सेव मिल जाए तो सेव करके गेम को आज के लिए बंद करें। लेकिन क्विक सेव मिलने से पहले ही एक बड़ा विलन आ गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने उसको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से हराया। वेल अब हम जल्दी से एक बार रिकैप मारते हैं कि भाई साहब हुआ क्या है, आज की पूरी वीडियो में क्या हुआ है। देखो आज हमें बस एक प्रूविंग एक चैंपियनशिप लड़नी थी जिसके अंदर हम खुद को साबित करते और खुद को बोलते, जीतने के बाद हम इनसे ये चीज मांगते कि हमें फिर से आप अपने ट्राइब के अंदर शामिल कर लो। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत ये हो गई प्रूविंग तो एलोय जीत गई थी, लेकिन जो जज था ना उसने बोल दिया कि कभी भी एक आउटसाइडर या आउटकास्ट हुआ हुआ बंदा वापस से ट्राइब ज्वाइन नहीं कर सकता। और लेकिन उसने कहा कि अब से हम ब्रेव जरूर हैं, मतलब एक तरह से हमारी पोजीशन वही है जैसी उन बाकी बच्चों की थी जो उस वो प्रूविंग के अंदर पार्ट लेने आए थे, लेकिन इन्होंने हमें चैंपियन डिक्लेयर नहीं किया। पर ये बात तो हमें वैसे ही दिमाग खराब कर रही थी हमारा, पर एक और बड़ी दिक्कत आ गई, और दिक्कत ये कि जो भी बाहर से लोग आए हुए थे ना चैंपियनशिप के लिए, बाहर से जो भी सर्वाइवर्स आए थे, सर्वाइवर तो नहीं कह सकते उन्हें, एक तरह से कह सकते कि दूसरे ट्राइब के लोग जो आए हुए थे उन्होंने हम पे हमला कर दिया। और उन्होंने बेसिकली हम पे हमला बस इसलिए किया क्योंकि वो मेरे को मारना चाहते थे। मेरे को क्यों मारना चाहते थे उसका भी राज हमें पता चला। ओलिन नाम का जो बंदा था जो कह रहा था कि उसको जो फोकस है किसी एक केव के अंदर से मिला, हमें भी केव के अंदर से ही फोकस मिला था, लेकिन उसका वाला फोकस येलो कलर का था और हमारा फोकस ब्लू कलर का। इससे पता चलता है कि उसका फोकस किसी और चीज से भी कनेक्टेड है। बस उसी की वजह से है ना बाकी सारे जो जिन लोगों ने हम पे हमला किया था वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हम कौन है, और इसलिए वो हमें मारने आ गए। अब आइडेंटिफिकेशन उन्होंने हमारी क्या निकाली, एक लेडी है बॉय कट जैसे दिखने वाली, उससे हमारा डीएनए 99% मैच हो रहा था, तो ये हो सकता है कि शायद वो हमारी मदर हो और इसलिए वो हमें मारना चाह रहे हो। लेकिन यार कोई हमारी माँ, इसलिए कोई हमें क्यों मारेगा, तो वो हमारी माँ के पीछे क्यों पड़े थे और हमारे पीछे क्यों मारना चाहते हैं, ये रहस्य अभी भी रहस्य है, इसको बारे में हम जानना चाहेंगे। प्लस जब वो लोग हमें मारने आए हमने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाया, लेकिन फिर उस बचाने के चक्कर में जो हमारा डैड था वो डैड मारा गया। और डैड को मारने के बाद हमने जब इनसे पूछा कि उसकी बॉडी का तुमने क्या करा, तो उन्होंने बोल दिया कि उसकी बॉडी को इन्होंने हमारे घर के, जो हमारा घर था ना जो जंगलों के अंदर था, उसी के अंदर इन्होंने जाके उसको बॉडी को रख दिया। फिर जो लेडी थी टेरसा जिसने हमारा नाम रखा था, उसी लेडी ने हमें बताया कि इन लोगों को मैं एक माउंटेन की गुफा के अंदर मिला था, और माउंटेन की गुफा के अंदर जो एलोय इनको मिली वो एक गेट के जस्ट बाहर पड़ी हुई थी। तो टेरसा को ऐसा लग रहा है कि वो शायद गेट के दूसरी साइड से आई है, लेकिन ये सारे लोग भाई साहब उस गेट को ही भगवान मानते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि उस गेट के दूसरी तरफ जो है ना भगवान है, कुछ लोग कहते हैं उस गेट के दूसरी तरफ डीमन है, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग में खाली बस मैं ही आता हूँ, मतलब एलोय आती है। एलोय कह रही है कि ये कोई भगवान या शैतान नहीं है, ये बस एक गेट है और उसकी दूसरी तरफ बस ह्यूमन है। और एलोय को ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरी तरफ है ना इसकी माँ हो सकती है क्योंकि ये उसी तरफ से आई है। तो बस जब इसने जाने की कोशिश करी तब इसको पता चला कि भाई साहब वो गेट करप्टेड है। अब वो गेट के ऊपर से करप्शन हटाने के लिए, मतलब उसको गेट को दोबारा ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखो जो हमारे पास थोड़े बहुत हिंट है, वो हिंट क्या है, जो ओलिन है ना, ओलिन से हम फिर से तहकीकात करेंगे और ओलिन से पूछेंगे कि भाई साहब तेरे को वो येलो फोकस वाली चीज़ कहाँ से मिली। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये, जो भी किलर्स आए थे ना वो किलर्स किस रास्ते भाग के गए थे, थोड़े बहुत जो उनमें बच गए थे उनको भागते हुए एक गार्ड ने देख लिया था। हम उस गार्ड से हमने पूछा, अब हम उस जगह पे जाएंगे। दो एक तरह से हिंट हमें मिले जिसकी बाद हम आगे स्टोरी बढ़ा सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, जब हम यहाँ पे आए तब हमें पता चला कि बाहर एक ऐसी मशीन है जो बाकी मशीनों को अपने काबू में करके अपने हिसाब से नचा सकते हैं, और वही एक वैसी एक मशीन ने अभी हमारे ऊपर हमला किया। हमने उस मशीन को हरा दिया और उस मशीन से वो इक्विपमेंट भी ले लिया। मे बी शायद अब हम बाकी सारी मशीनों को अपने काबू में कर पाए। बहुत मज़ा आएगा कल की वीडियो में, देखते हैं कि भाई बाकी मशीन को हम अपने काबू में करेंगे तो उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।